नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशिक खबरां विभागावरवीं सविता बर्वे तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. दिव्यांग लोकांक समान वागणूक दिल्यारूच समाजाची खऱ्या अर्थान उदरगत जावंक शकता अशें राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी म्हणलां. नवी दिल्लीत दिव्यांग व्यक्तींच्या सशक्तीकरणा खातीर राष्ट्रीय पुरस्कार भेटवण सुवाळ्यात त्यो उलयताल्यो. इसी समाज को सही अर्थों में विकसित माना जा सकता है, जिसमें दिव्यांगजन की बराबर की भागीदारी हो. दिव्यांगजन संवेदनशीलता और करुणा के पात्र नहीं है, ये बराबरी के हिस्सेदार है. मजगती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आंतरराष्ट्रीय दिव्यांग जन दिसा निमतान दिव्यांगांक स्वाभिमान, सुलभताय आनी समान संद सुनिश्चित करपाच्या सरकाराच्या संकल्पाचेर पुष्टी केली. दिव्यांग व्यक्तींनी आपल्या सर्जनशीलतायेन आनी निर्धारान विंगड मळार उत्कृश्ट कामगिरी केल्या अशें तांणी सोशल मिडिया पोस्टा वरवीं म्हळां. सरकारान फाटल्या 3 वर्सांत MADAD पोर्टला वरवीं सुमार 1,38,000 कागाळी सोडयल्यात अशें विदेश वेव्हार मंत्री डॉ. S. जयशंकर हांणी सांगलां. आयज नवी दिल्लीत जाल्ल्या भारतीय संवसारीक वर्सुकी परिशदेंत ते उलयताले. वेगवेगळ्या देशांतल्यान जावपी बेकायदेशीर स्थलांतरा आड राजकीय आनी समाजीक प्रतिक्रियेचेर तांणी भाश्य केलें. It's in our interest to be against illegal, irregular mobility. But that also requires cooperation. So there are a lot of issues here, sometimes documentation. There are countries which cite privacy, but they can't have it both ways. They can't say it's privacy, we can't tell you, but by the way, he's yours, take him back. So we need a degree of transparency and understanding here. नवे राष्ट्रीय शिक्षण धोरण आवय भाशेचेर आदारिल्ल्या शिक्षणाचेर भर दिता अशें केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हांणी म्हणलां. समग्र शिक्षा अभियान NEP आनी PM श्री हांचो परस्पर संबंध आसा. तशेंच समग्र शिक्षा अभियानूय राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाच्या शिफारशी वांगडा सुसंगत आसा अशें तांणी राज्यसभेत पूरक प्रश्नाक जाप दितना सांगलें. सरकार देशांतल्या 50,000 शाळांनी नवे अटल थिंकरिंग लॅब स्थापन करतले. शाळा पांवड्यार संशोधन आनी नवनिर्माणाक चालना दिवपा खातीर अटल इनोव्हेशन मोहिमे खाला 10,000 परस चड अटल थिंकरिंग लॅब स्थापन केल्यात अशी माहिती तांणी दिली. फटीच्यो खबरो लोकशाये खातीर धोक्याच्यो आसात अशें माहिती आनी प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी म्हणलां. आयज लोकसभेत प्रश्नवराक पूरक प्रश्नाक जाप दितना तांणी सांगलें. सोशल मीडिया पर, फेक न्यूज़ पर, AI जनरेटेड डीप फेक पर स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की जरूरत है. जिस तरह से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का उपयोग करके एक तरीके से कई ऐसे इकोसिस्टम बन गए जो कि भारत के संविधान को फॉलो नहीं करना चाहते, बहुत तरह से इस पार्लियामेंट द्वारा बनाए हुए कानून को भी पालन नहीं करना चाहते, उसमें स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की और कड़े नियम बनाने की सख्त जरूरत है. देशांतली सुमार 100% रेशन कार्डां आतां डिजिटल जाल्यात अशी माहिती केंद्रीय अन्न भौशीक वितरण मंत्री प्रल्हाद जोशी हांणी दिली. 20.58 कोटी घरगुती रेशन कार्डांतली सगळीं कार्डां डिजिटल जाल्यात. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न येवजणे खाला सरकार लावार्थ्यांक फुकट रेशन दिता आनी ते वर्स 2029 मेरेन चालू उरतले अशें तांणी सांगलें. सरकारान संचार साथी ॲपाची वाडती स्वीकृताय मतींत घेवन मोबायल फोन निर्मात्यांक हो ॲप प्री इन्स्टॉल करप सक्तीचें ना अशें सांगलां. नागरिकांक खंयच्याय वेळार हो ॲप अनइन्स्टॉल करपाक मेळटा अशें सरकारान स्पश्ट केलां. मजगती केंद्रीय संचारण मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया हांणी आयज विरोधकांनी केल्ल्या हेरागिरीचे आरोप न्हयकारले आनी संचार साथी ॲपा वरवीं हेरागिरी करप शक्य ना अशें सांगलें. ऐप और पोर्टल के आधार पर 1.5 करोड़ मोबाइल कनेक्शन देश के अंदर डिस्कनेक्ट हुए हैं जो फ्रॉडुलेंट हैं. करीब 26 लाख स्टोलन हैंडसेट हम लोग ने ट्रेस की और 41 लाख मोबाइल कनेक्शन डिस्कनेक्ट हुए हैं. 6 लाख फ्रॉड हम लोग ने ब्लॉक किए. व्हड पावसाक लागून आशिया खंडात खर हुंवार येवपाची शिटकावणी संवसारीक हवामान संघटनेन दिल्या. मजगती भारतीय हवामान खात्यान तमिळनाडू, पुडुचेरी, करायकल आनी तेलंगणात चड पावस पडपाची शक्यताय उक्तायला. फुडल्या 2 दिसांत पंजाब, मध्य महाराष्ट्र आनी मराठवाड्यात शिंयाच्या ल्हारांचो अदमास आसा. तशेंच आसाम, मेघालय, हिमाचल प्रदेश, नागालँड, मणिपूर, मिझोराम, त्रिपुरा आनी ओडिसात दाट धुके पडपाचो अदमास खात्यान उक्तायला. रायपुरात चालू आशिल्ल्या एका दिसाच्या क्रिकेट खेळात भारतान दक्षिण आफ्रिके मुखार जैता खातीर 326 धांवड्यांची मोख दवरला. निमणी खबर मेळ्ळी तेन्ना दक्षिण आफ्रिकेन 7 षटकांत 1 गडो वगडावन 34 धांवड्यो केल्यात. इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो. आमचे मुखावेले राष्ट्रीय खबरापत्र तुमकां आयकुपाक मेळटले फाल्यां सकाळीं 8:40 नमस्कार.